Respected Honorable Speaker, Lok Sabha Sri Om Birla ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Sri Harivansh Narayan Singh ji, Honorable Chairman CPA India Zone 3, Speaker of Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Sri Pasang Sonaji, Honorable Chief Minister of Meghalaya Sri Conrad K. Sangma, all Honorable Speakers, Honorable Deputy Speakers of Northeast Region, all Honorable MLAs, MPs from various Northeastern states, Secretary General of Lok Sabha and Rajya Sabha, all Principal Secretaries, Commissioner Secretaries, Secretaries of State Assemblies of Northeast Region, ladies and gentlemen. It is indeed a great privilege for me to extend a warm and hearty welcome to you all in this 20th annual CPA India Region Zone 3 conference being held in this beautiful city of Shillong, Meghalaya, also popularly known as the abode of the clouds or Scotland of the East. Meghalaya is blessed with natural wonders and unsurpassed by their ever-increasing inflow of foreign and Indian tourists every year. Today, we are particularly honored and privileged with the presence of Sri Om Birla ji, Honorable Speaker Lok Sabha, and Sri Harivansh Narayan Singh ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, in this august house despite their busy schedule. We had the privilege of being addressed by Sri Om Birla ji, Honorable Speaker, in this august house on 25th February 2021. This will also further inspire our members in their participation in the House. The Meghalaya Legislative Assembly has always conducted its business in a very disciplined manner with high standards of decency and decorum. As we are all aware, the CPA India Region Zone 3, erstwhile the Northeast Region Commonwealth Parliamentary Association, NER-CPA, was initiated in 1996-97 when late Sri Purno A. Sangma was the Honorable Speaker of Lok Sabha. And the first annual NER-CPA conference was held in April-May 1997 at Kohima, Nagaland. Late Sri Purno A. Sangma was an accomplished political leader from the Northeast and needs no introduction. He conceived the idea of having the East Region Commonwealth Parliamentary Association and the Northeast Region Institute of Parliamentary Studies and Training, NERIPSTAR, so that the Northeast states and its members develop at par with other states in India and speak in one voice. His vision, honesty, forthrightness, and above all, his unshaken faith in parliamentary democracy have already placed him in the forefront of national politics. As we are all aware, the aims of the CPA India Region Zone 3 is to promote knowledge of the constitutional, legislative, economic, social and cultural aspects of parliamentary democracy with special reference to the 8 northeastern states which are sub-branches of the main CPA India region branch, Lok Sabha. So far, we have held 19th East Region Commonwealth Parliamentary Association or CPA India Zone 3 at different northeastern states, and many important topics were discussed and resolutions were adopted. This is the third time that we are holding the annual NER-CPA or CPA India Region Zone 3 conference in Shillong, Meghalaya. The last conference that Meghalaya held was 12th annual NER-CPA conference when Srimati Meera Kumarji was the Honorable Speaker of Lok Sabha. The NER-CPA or CPA region in India Zone 3 is a unique and broad-based forum for parliamentarians and legislators of Northeast region of the country.
It is a common platform for coordinating and discussion not only on best parliamentary practices and procedures, but also for developing our fraternity and for raising a concerted voice on issues of common interest of Northeast region. The aims, objects, and scope of the conference keeps on widening. Since its inception in 1996, NER CPA or CPA India Region Zone 3 has evolved into a vibrant and effective forum of the Northeast region. I hope this forum will continue to grow and put our efforts collectively for the common interests of the region in the near future. Over the years, it has evolved into a vibrant and effective forum for not only advancing the interests of the region, but also for developing our fraternity and raise concerted voice on issues of common interest of the Northeast states. Sir, we have chosen 2 topics for discussion during this conference, which I hope all the honorable members will participate enthusiastically and provide good suggestions with management of time and guidance from Sri Harivansh Narayan Singh Ji, Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha. One of the topics is on natural disasters and strategies for management with special reference to Northeast region. The scope of this topic is vast. The Northeast region is prone to disasters like earthquake, floods, cyclonic storms, etc. And we also fall under Zone 5 of seismicity map of India. Flash floods, landslides, cyclonic storms are recurrent phenomenon which led to loss of many lives and extensive damage to properties. Even COVID pandemic years were also termed as natural disaster years, and many precious lives were lost. Climate change can also partly be contributed for the frequency and intensity of the natural disasters. Natural disasters are not bound by boundaries and have no social or economic considerations. Therefore, it is our fundamental duty to jointly manage and adopt strategies to tackle these disasters occurring from time to time. The second topic on regional connectivity to bring Northeast region at par with mainland India is equally important for Northeastern states. Assam is the gateway of Northeast states for connecting with other mainland states. Development of infrastructures for air, roads, and railways are very important for connectivity, not only with mainland India, but also with other Southeast Asian countries for economic and tourism development of the region. I am sure we will be having a productive and fruitful discussion on these 2 topics with good suggestions from all the honorable members. I have shared with you some of the thoughts that crossed my mind. I am very glad to see the representatives of all the people of this Northeast region assembled in this forum today. I wish you a pleasant stay and hope that you will carry back home fond memories, and I wish the conference a resounding success. Thank you. Jai Hind, Kublai, Matela. Good afternoon, and we are happy to be here in Meghalaya, Shillong. I am quite privileged to be standing here and acknowledging the presence of Honorable Speaker Lok Sabha, Sri Om Birla Ji, for this 20th annual conference of Commonwealth Parliamentary Association, India Region Zone 3. So thank you for giving us your time and being here as a part of this conference. And Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Sri Harivansh Ji for always accepting our invitation
despite his busy schedule. So I once again thank you on behalf of Honorable Chief Minister Meghalaya and Honorable Speaker Meghalaya for being here and being part of this conference. And the host, Honorable Chief Minister Sri Conrad Sangmaji, Honorable Speaker Meghalaya Sri Thomas Sangmaji, speakers, Honorable Speakers, Honorable Deputy Speakers from various states, Honorable Ministers, Honorable MLAs from various states and Honorable Member of Parliament, officials of Legislative Assembly across the northeastern state, and the media friends. Like Honorable Speaker Meghalaya in his opening note has talked about the background of the CPA Zone 3, how it was conceived. I'm quite happy and little emotional to be here and talking about one of the statesmen and one of the most illustrious leader from the northeastern state, who is none other than father of our Honorable Chief Minister, Conrad Sangma's father, late P.A. Sangmaji, who has conceived this idea of NER-CPA during those days. And now it has traveled so far. Now we are having the 20th conference here at Shillong today. So it makes more significance that we are having the conference here. And I would like to thank you, Honorable Chief Minister and Honorable Speaker, for making it happen and giving us such a cordial welcome and making our stay so comfortable here in this beautiful town of Shillong, which is also known as the Scotland of East. On behalf of all the delegates who have traveled from different parts of the northeastern state and who had come all the way from Delhi, along with Honorable Speaker, Lok Sabha, Honorable Rajya Sabha, Deputy Chairman, for giving us such a beautiful reception and a comfortable stay here in Shillong. We will cherish it for a long, long time to come. And now coming to the CPA, as we all know, Honorable Speaker has talked at length about the importance of these conferences. And we at times feel so proud when Honorable Speaker tells me and Honorable Deputy Chairman tells me that we are one of the most active branches. India has got 4 zones. Zone 3 is the most active CPA branch in India, and we are having regular executive committee meeting, regular conferences in all these years. And it's just not a conference where we meet and greet each other. We deliberate on many vexed issues which is, concerning the northeastern state. So every time we try to come up with a topic for discussion which will not only help in formulating the policies, not only help us, furthering our, common cause of the northeast state, but as a northeast on a same platform, how we cohesively move forward in the larger interest of the region. Because earlier days it used to be, when we talk about the northeastern state, it used to be just Assam. People never used to see beyond Assam. If I go to the mainland, if they ask me, where are you from? If you tell them Arunachal, they'll say Himachal. Then I said, no, Arunachal Pradesh. They'll say, oh, Andhra Pradesh. That was the kind of, understanding about the northeastern region in the mainland. But with effort and with the blessing from Honorable Speaker and Rajya Sabha and the Government of India, now the northeast has got a different pedestal and different, what do you call that, recognition. So today, like we said, Honorable Speaker has said, we have 2 very important topics of discussion which will take place in these 2 plenary sessions which will be held today and tomorrow. One is about the natural disaster and strategies for management with special reference to northeastern state. I would like to say that before the lunch, I was sitting with the Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha. When we talked about natural disaster, the northeastern state is so prone to natural disaster. And every year we have so much of a problem, pertaining to the natural disaster. But never in the national media we have a focus. This time a little water came into Delhi. They made it in such a news that the whole Delhi is underwater. But how we face natural disaster when during the monsoon and during the other times, landslide, the places used to get disconnected for, months together. But we never used to get a platform to, kind of reach out to the
the concerned agency for the redressal. So today when we discuss about the natural disaster and how to manage it, maybe we will come out with certain document which can help the central government and the people at the helm of affair. How do we contain it? So when it comes to the natural disaster, someone has rightly said that we cannot stop natural disaster, but we can arm ourselves with knowledge so that so many lives couldn't be lost, and if there was enough disaster preparedness. So here he talks about prevention. There's no point in scratching your head after the disaster had happened. So we need to focus how we go about the preparedness to tackle with this menace of natural disaster, and how our northeastern economy is being affected, how the natural disaster is affecting every walk of life for the northeastern state, and how we need to come to a solution where we have an everlasting solution to this problem which we have been facing perennially. So this is one of the topics which we'll be discussing, and I hope that members will participate very positively and give very insightful suggestions which we can document it and further use it for all practical purposes, which will help us, the northeastern region, to tackle this menace. And secondly, the topic is regional connectivity to bring northeastern region at par with the mainland India. So I've seen we had many conferences about the Connect Northeast. What are the way out, what are the way forward, what is the roadmap when we talk about the connectivity for the northeastern state. Honorable Prime Minister has rightly said, we need to focus on roadways, airways, waterways, and highway. So when we talk about the road network, the waterways, the airways, we are very happy, the northeastern state. Over the time, there has been a sea of changes when it comes to the road network. There has been a sea of changes when it comes to the air connectivity and the waterways, even in the Assam and all. So we are very happy, but a lot needs to be done. That will only come up because when we tell them where is the bottleneck, how do we go about it? And the most importantly, when we talk about digital India, so the internet, the digital connectivity is one of the most important things which we need to focus, because the world is getting digital. And I always keep saying, we are illiterate if you are not illiterate. So in this era of digital connectivity, we need to know how important everything, right from your banking, right from your official work, right from connecting with friends, right from your business, everything is dependent on the internet. So, like what Bill Gates has said, internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. So like always say that the world has shrunk to the size of an orange. We have the world in our hand. It's a smartphone we have. We can do everything over our palm. So when the digital connectivity is so important, that it's even more important to have the digital connectivity to the remotest place of our region where we all can benefit out of it. Because today, even if you are not able to go to a good institution to study, but if you have a digital connectivity, you can go through our online classes. Likewise, for every aspect, we feel that it's one of the most important things. So we will be discussing how to get the digital connectivity to the remotest corner of the northeastern state in the larger interest of the country, because security of the northeastern state is very strategic for the security of our country. We are on the forefront, so we need to be more secure to secure our nation. And when it comes to road, we all know John F. Kennedy has said, he said, American roads are not good because America is rich. America is rich because American roads are good. So this is the significance of having a good road network for overall development of a place. So these are the few things which we'll be discussing in these 2 days of plenary session to be held here. And I'm hopeful every member will give a lot of good inputs which will help us document. And like Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha has said, whatever we discuss, he makes it a point that he tells people there in the helm of affair, people who are
in the center to know about the northeastern states problem. So with this few words, not taking much of time, I would like to once again thank Honorable Chief Minister, Honorable Speaker for hosting the conference here and giving a huge impetus to our endeavor to bring all the northeastern states on the one platform to discuss issues which are concerning our northeastern state. And with the presence of Honorable Speaker Lok Sabha and Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, our voice will be heard at the national level. This is my expectation, and I'm sure, and I'm pretty much sure that Honorable Speaker and Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha will be our ambassador and will be our messenger to the central leadership. And this will help us in taking Northeast further ahead and making us at par with the mainland India. Thank you so much. Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Speaker of the Meghalaya Legislative Assembly, Shri Thomas A. Sangma ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, Shri Harivansh Narayan Singh ji, the CPA India Region Zone 3 Chairman, Shri Pasang D. Sona ji, all the respected honorable speakers who are present out here, all the deputy speakers, all my cabinet colleagues, and all the cabinet ministers from different parts of the Northeast, all our respected MLAs, our Secretary General of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and all the other officials who are present out here today. A very warm and cordial afternoon to all the distinguished guests gathered here today, and a heartfelt welcome to our beautiful state of Meghalaya. On behalf of the Commonwealth Parliamentary Association, India Region Zone 3, the state of Meghalaya is honored to host the 20th annual conference of CPA here in Shillong. On this occasion, we are honored to have Shri Om Birla ji, the Honorable Speaker of Lok Sabha and CPA India Regional Chairperson in our midst. On behalf of the people of Meghalaya, the Commonwealth Parliamentary Association, and all of us present here today, I extend a warm welcome to you. Founded in 1911, the CPA is one of the oldest organizations in the Commonwealth. This association brings together its members with a shared commitment to promote the rule of law and pursue the ideals of parliamentary democracy. The association has a unique distinction of bringing together a large number of parliamentarians to promote knowledge of the constitutional, legislative, economic, social and cultural aspects of parliamentary democracy and of matters that pertain specially to the 8 Northeast states which are from CPA India Region Zone 3. The Northeast region, with its rich and unique culture, language, biodiversity, is now touted as the gateway to new opportunities and acts as a potential hub for India's trade relation with ASEAN nations. It possesses tremendous economic growth potential to bring India as a regional and global power. The region is a tranquil, timeless image of green hills which often conceals the region's predicaments. Through our shared efforts, we have been able to continuously tackle these issues and work in collaboration to emerge as the nation's powerhouse. This brings us to our key themes for today's discussion. Number 1, natural disasters and strategies for management with special reference to Northeast region. And 2, regional connectivity to bring Northeast region at par with mainland India. Our geographical location in a high seismic zone and mountainous terrain, coupled with the effects of climate change,
leave our region prone to natural disasters such as floods, landslides, cyclones, droughts, and earthquakes. Heavy floods, landslides, cyclone droughts, and occasional earthquakes have now become regular occurrences. These calamities are always a setback to the pace of development, something that we need to encounter with a resolute determination and an effective response mechanism. This reminds me of the recent floods in the Garo Hills, where a timely and coherent approach was taken involving the government agencies, private sector organizations, non-profit, faith-based organizations, and volunteers. Their combined efforts resulted in a well-organized mechanism of channelizing the available resources to cope with the disaster and coordinating the roles and responsibilities of responders in an effective manner. Our community institutions have to be similarly empowered so that they can act as first responders to save lives in any disaster. We need to document and study the impact of climate change so that we can make predictive models to understand how changing weather patterns can impact our fragile ecosystems. I have, in the recently concluded G20 summit on Nature Solves, advocated for setting up a Center of Climate Change in the state of Meghalaya. The center can be a regional hub of excellence, gathering climate data and designing strategies for the entire Northeast region. The Meghalaya government is coordinating with the Northeast Space Application Center, Department of Space, Government of India, for an early warning alert system for cyclone, landslides, flood, and lightning. The state government has also decided to use drone technology in disaster management and its mitigation. Our approach towards minimizing the effects of climate change encompasses comprehensive risk assessments, early warning systems, public education, and strict infrastructure standards. Preserving the ecosystem, establishing disaster response plans, pre-positioning resources, and fostering collaboration are essential. We are also building capacities involving communities and preparing for post-disaster recovery plan and continuously improving our plans based on lessons learned and advancements to ensure a proactive response, reducing the impact of disasters on lives, property, and the environment. Although our location has been creating hurdles to the pace of our development, but it also holds significant importance in terms of strategic, cultural, economic, and ecological aspects, leading to development of trade and commerce with ASEAN countries. This plays a vital role in improving the socio-economic condition of the states of Northeast. I would like to extend my sincere gratitude to the Honorable Prime Minister and the Government of India for the various strategies, policy interventions, initiatives like Gati Shakti, Udan, infrastructure developments for the Northeast region. There are huge investments being made in key sectors like tourism, infrastructure, logistics, food processing, and others, which are making this region a preferred investment destination. This brings me to the second topic of today's discussion, regional connectivity to bring Northeast region at par with mainland India. Northeast India is positioned to serve the Government of India's strategic vision encompassed in the Act East policy. The region has abundant deposits of oil, natural gas, coal, and limestone, and a sizable proportion of land under cultivation. Among the countries with which it shares a border, the majority of Northeast India's trade is with Bangladesh, while its trade with other neighboring countries such as Bhutan and Myanmar mostly occur through border points located outside the region. Meghalaya acts as a land bridge for India's participation in institutional forums, including the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation and the South Asia
Sub-Regional Economic Cooperation Program. Leveraging upon its link with Bangladesh, Meghalaya has been focusing on improving trade activities at the border area. As part of this effort, border infrastructure shall be improved by establishing more integrated checkpoints along with land custom station and border huts. In this direction, road connectivity along the Dauki-Bholaganj Road and Tura-Dalu Road are also being improved. We also are establishing integrated checkposts and border huts to promote economic activities. Through PMGSY, over 4,200 kilometers of rural roads have been constructed across the state. Through PM Gati Shakti, we are already connecting key economic hubs in the state. In line with this, we are soon going to launch a new scheme to connect every single habitation in Meghalaya with roads. Currently, 18 major road projects are being implemented to connect Meghalaya with other states. We are even in process of establishing a direct link with West Bengal through Mahendraganj Hilly Road. This will reduce a distance of 600 kilometers to just 85 kilometers and will foster trade and commerce. Today, with around 10,000 passengers every month, the Shillong Airport is directly connected to Delhi, Kolkata, Aizawl, Agartala, Imphal, Dimapur, Dibrugarh and Guwahati. With the help of Government of India, we are now taking steps to upgrade the Shillong Airport to accommodate bigger flights. We have additionally requested the Ministry of Civil Aviation to declare the Shillong Airport as an international airport to improve direct connectivity with countries bordering the northeast states, which will greatly boost the Act East policy. Thanks to the Government of India, under the Act East policy, several projects funded by the Ministry of External Affairs have been undertaken to connect northeast states with neighboring countries like Myanmar and Bangladesh. This even includes the development of an economic corridor. Playing to the regional strength, industry and government partnership can scale up development of the region while maintaining the right balance and mitigating the threats that have existed traditionally. Adopting learnings from small countries of Europe and Asia that have significantly lifted up their economy with limited resources while protecting the flora and fauna shall take the Northeast region's regional economy to higher levels. An integrated approach, greater cooperation at regional and local levels are essential for this development. I believe that a shared vision of costs and benefits through strategic planning and infrastructure interventions are key strengths for the development of the region. As we embark on this two-day conference, I envision a vibrant and intense exchange of views, knowledge, and experiences. We have great opportunities facing us despite the numerous challenges. With the support of the Commonwealth Parliamentary Association members, we will channelize our focus areas by complying and following the decisions and resolutions that will be adopted in the conference. I will close my speech in the lines of Bernadette Devlin, former Member of Parliament of the United Kingdom. My function in life is not to be a politician in Parliament. It is to get something done, unquote. And I'm sure this is the driving force for each of us here in this conference today. Once again, my best wishes for the success of this 20th annual conference of Commonwealth Parliamentary Association Conference. Thank you. Kublai, Matela, and Jai Hind. आदरणीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय स्पीकर एवं CPA इंडिया जोन 3 के चेयरमैन माननीय श्री पसांग सोना जी, मेघालय विधानसभा के माननीय स्पीकर श्री थॉमस संगमा जी, नॉर्थ ईस्ट रीजन के माननीय स्पीकर
एवं डिप्टी स्पीकरगण, मेघालय सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, इस रीजन की विधानसभाओं के माननीय सदस्य एवं अधिकारीगण, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा राज्यसभा के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे लिए व्यक्तिगत खुशी की बात है कि सीपीए इंडिया जोन की तीसरी यहां पर यह 20वीं कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का मौका मिल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ग्रेसियसली होस्ट करने के लिए मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर साहब को बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां की सरकार और अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की और ये इतना सुंदर प्रदेश है कि हम सबका यहां रुकना बहुत ही आनंद से भरपूर है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब यहां खड़ा हूं तो देश के हमारे पूर्व स्पीकर और सिर्फ मेघालय के या मेघालय की राजनीति के बड़े दिग्गज नहीं, देश की राजनीति के दिग्गज पीए संगमा साहब की याद आ रही है। इस सीपीए या कॉमनवेल्थ चैप्टर को हिंदुस्तान में और इस रीजन में बढ़ाने में उनका उल्लेखनीय योगदान तो रहा ही, पर सदन के संचालन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में उन्होंने बहुत एक नया तौर तरीका जो हम सब के लिए अपनाया, देखा, आज भी प्रेरक है। मेघालय दरअसल हिंदी में 2 शब्दों से बना है, मेघ और आलय, यानी इट मीन्स द एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। गुवाहाटी से शिलोंग तक की यात्रा और बगल में उमियम झील को देखना, सचमुच इसके प्राकृतिक सौंदर्य को जानना और मनोहर पूर्ण दृश्यों को देखना इस राज्य में आने से पहले ही एहसास कराती है कितना सुंदर राज्य है, प्रकृति ने कितना बेहतर बनाया है। और अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, उनका विजन और जिस तरीके से अनेक योजनाएं केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में यह राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा। मैं दशकों से, डिकेड से मैं नॉर्थ ईस्ट आता रहा हूं, पर पिछले 14 के बाद जो बड़े चेंजेस हमें इस इलाके में देखने को मिलते हैं वो बड़े रिमार्केबल है। और अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से सुना भी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बाहर में नई असेंबली कैसे यहां बन रही, और अनेक अर्बनाइजेशन के इस कदर सुंदर ढंग से प्लान बन रहे हैं कि जिन हिली एरियाज में आप जाएंगे, बड़े शहरों में अर्बनाइजेशन का संकट एक अलग तौर से दिखाई देता है। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में यहां जिस तरह की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, सड़कों के निर्माण और अर्बन प्लानिंग की चीजें हो रही हैं, वो निश्चित रूप से देश में नहीं दुनिया में जो हिली रीजन्स के बड़े शहर हैं जहां बहुत अधिक टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल होगा। द इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन गुवाहाटी टू शिलोंग बाय रोड वाज अनइमेजिनेबल बिफोर। मैं पहले आया हूं माननीय स्पीकर साहब, लगभग जर्नलिस्ट के तौर पर 15-20 वर्ष पहले गुवाहाटी से यहां आना बहुत अधिक समय लगता है। आज यह यात्रा बहुत सुगम हुई है, कुछ दिनों में और बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं सीपीए की नॉर्थ ईस्ट रीजन की कॉन्फ्रेंसेस के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट श्री पसांग सोना जी एंड एवरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न जोन who have taken initiative in keeping CPA Zone 3 among the most active regions in the Commonwealth Parliament India chapter. Consistently engaging in a constructive dialogue on various subjects is the basis of a strengthening democratic values and setting the path of progress ahead. हर सम्मेलन में रिमार्केबल चीज मैं आपको जो मैंने समझा है बताऊं कि हर स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स ने बड़े बहुमूल्य सुझाव और योगदान दिए, हर स्पीकर ने दिया है। इनका असर होता है कि पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के दौरान एजेंडा सेट करने में रास्ता बहुत क्लियर होता है। इट रिफ्लेक्ट्स आवर कमिटमेंट टू फाइंडिंग कलेक्टिव सॉल्यूशंस टू द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर पीपल बोथ ऑन लोकल एंड नेशनल स्केल. It is not just the presiding officers, even the Honorable Chief Ministers have played an important role in keeping the conversation vibrant and meaningful. In many of my visits here, the Honorable Chief Ministers have dedicated their
valuable time to be a part of the broader conversation as well. 2022 में ईटानगर में हुई कॉन्फ्रेंस में हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन की चुनौतियों और इंडिजिनियस पॉलिसीज को प्रमोट करने के विषयों पर चर्चा की. Early this year in February at Gangtok conference, we discussed citizens' engagement alongside challenges for youth, such as drug abuse and cyberbullying. और यहाँ जिन दो विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सारे विषय आप देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक, उन पे हम डिबेट करते हैं. I commend the organizers that these two topics here which is going to be discussed, natural disasters and strategies for management and regional connectivity to mainland India, have been chosen for discussion of this conference. They are of utmost importance. While these appear as two different subjects, they are bound by a common question that looms large for India as well as the entire world. It is about the emphasis on economic growth and balancing it with protecting the biodiversity of the region. An unchecked and unregulated investment in exploiting the resources naturally has a negative impact through increased intensity of flood erosion and landslides. Among other such disasters, in many ways, sustainable development is the underlying theme. North-eastern region देश के ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 8% है, लेकिन भारत के फॉरेस्ट कवर का लगभग 1/4, 20 to 25%. The country benefits from its rich biodiversity. देश को ऑक्सीजन का अगर कहें हार्ट तो ये इलाका है हमारा. While we call floods, landslides and cyclones as natural disaster, by now that there is a sizable component of man-made activities that have led to some of these unforeseen weather changes. These disasters not only cause physical damage but also deeply impact the social fabric and economic stability of communities. Furthermore, the rich biodiversity of the northeast region with its unique and endemic flora and fauna suffers significant harm. हम इस मानसून में नेचुरल डिसास्टर को बढ़ते हुए देख रहे हैं. यही समय है कि हम डिसास्टर मैनेजमेंट के मुद्दे को आगे की चैलेंज के लिए तैयार करने के लिए एक फ्रेश आउटलुक तय करें. I would like to mention, during the meeting with state ministers related to disaster management last month, Honorable Home Minister emphasized zero loss of life during natural disasters. Embracing the Honorable Prime Minister's 10-point agenda for disaster risk reduction can significantly enhance our nation's resilience and preparedness in the face of disasters. पूरे देश के स्तर पे डिसास्टर मैनेजमेंट में 2014 के बाद रिमार्केबल स्ट्रेटजी बनी है विथ विजन. Empowering local communities with knowledge, resources and early warning systems is also crucial for their safety and resilience during difficult times. Though these efforts, we can better protect our people, infrastructure and natural resources. And ravages of disasters, further the impact of climate change and natural disasters are even among the northeastern states as well, which calls for greater focus on state action plans. It is important to note that planning for disaster management is no more an isolated policy, but has to feature in the broader plans to tackle climate change in every state. While we have the concept of state action plans on climate change, these plans need to be regularly revisited to account for the latest scientific evidence. और आपने सुना कैसे साइंटिफिक और नए इंस्टीट्यूशंस यहाँ इसरो वगैरह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है और वो आकार ले रही हैं. While the increasing frequency of natural disasters, it is imperative to plan the financing of climate action plans as well. मुझे यकीन है अगले 2 दिनों में इन विषयों पर गहराई से चर्चा होगी. I am hopeful that the ideas shared by members here will spark further conversation among respective state governments as well. Meghalaya, an entire northeast region, hold immense cultural, geographical and historical significance. While India has experienced impressive economic growth in recent decades, I would like to mention, under Honorable Prime Minister Narendra Modi, there is an increased focus on making northeastern states an integral part of India's development policy. और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से उल्लेख किया मेघालय के संदर्भ में.
The government's main focus has been on expanding and upgrading road networks, facilitating a smooth movement of goods and people. As of December 2022, 4,121 kilometers of road projects have been completed, and another 7,545 kilometers are in progress, positioning the Northeast as a vital gateway to Southeast Asia. Additionally, railway and air travel in the region have undergone substantial modernization. एक्ट इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने जितना एम्फेसिस यहां दिया है वो रिमार्केबल है और आने वाले दिनों में और अभी उसके परिणाम दिख रहे हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, प्रायोरिटाइज इनहेंसिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी, making air travel more affordable. Currently, 17 airports are operational in this region, a significant increase from just 9 in 2014, almost double. Railway. A few years back, rail connectivity to the hilly terrain of northeast region was unthinkable. On the railways front, I am glad that alongside the focus on better investment in improving connectivity, the northeastern region finds a special mention. The railways in the last 9 years have spent over 50,000 crore in the region. The railways in the last 9 years have spent over 50,000 crore in the region on laying new railway lines and building bridges, tunnels, etc., and has sanctioned new projects worth nearly 80,000 crores. This focus on capital expenditure has ensured that the capital connectivity project that aims to connect all northeast state capitals is reality now. Early this year, the Ministry of Tourism also launched the Bharat Gaurav train to promote tourism on wheels in this region. These infrastructure initiatives extend far beyond physical connectivity. They foster greater economic integration by bridging gap between regions and states, providing businesses access to larger markets and new trade opportunities. This boosts commercial activity, attracts investment, and catalyzes the growth of ancillary industry and services, creating job opportunities and improving livelihoods. There is no doubt that greater decentralization and better planning at the state level are key to addressing the diverse challenges each state faces. For economic growth to sustain, we must ensure that there is sustained dialogue among stakeholders to maintain peace in all regions. Economic growth can only prosper in times of peace and certainty. This can only be ensured through political dialogues like these and better engagement with the citizens. मैं प्लेनरी सेशन में पार्टिसिपेट करने और ऑनरेबल मेंबर्स के विचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं. इस वाइब्रेंट रीजन की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कलेक्टिवली वायबल सॉल्यूशंस हम सब मिलकर ढूंढेंगे, ये हमारा विश्वास है. एज वी एम्बार्क ऑन आवर जर्नी towards global leadership during our G20 presidency, we are committed to leaving no region untouched. Our vision for progress includes every corner of our beloved country, including the Northeast region, to build a stronger and more vibrant India. आप सुनते होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस अमृत काल में आने वाले 25 वर्षों का हमारा सपना क्या है. निश्चित रूप से यह रीजन 25 वर्षों में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया का एक मॉडल बनेगा. मेरा विश्वास है हम सब मिलकर इस मौजूदा परिस्थिति में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस डायलॉग से जो विमर्श से चीजें निकलती हैं उनको आगे ले जा सकते हैं. मेरा विश्वास है ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस बहुत बेहतर तरीके से होगा और हमें आगे बढ़ने के लिए बड़े सकारात्मक सुझाव मिलेंगे. मैं आयोजकों का पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन थर्ड सीपीए रीजन थर्ड के इस सम्मेलन में इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरवंश जी, मेघालय के स्पीकर श्री थॉमस संगमा जी, सीपीए रीजन थर्ड के चेयरमैन श्री पीडी सोना जी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व राज्यों के माननीय स्पीकरगण, डिप्टी स्पीकरगण, राज्यों के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, पत्रकार साथियों, सीपीए जोन थर्ड जो एक सबसे सक्रिय रीजन है, जहां अभी तक 20 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस यहां पर अलग अलग राज्यों में हुई, अलग अलग विषयों पर हुई, मुद्दों पर हुई, वर्तमान भविष्य की चुनौतियों के लिए हुई। इसके लिए मैं सीपीए रीजन के पदाधिकारी, विशेष रूप से चेयरपर्सन पीडी सोना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसकी शुरुआत हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने भारत की संसद की परंपराएं, परिपाटियों की एक नई दिशा दी और एक चुनौतीपूर्ण तरीके से इस राज्य की समस्याओं का समाधान भी किया और देश के लोकतंत्र को एक दिशा देने का काम किया। स्वर्गीय पीएस संगमा जी का योगदान इस देश के संसदीय लोकतंत्र में हमेशा याद रखा जाएगा और जो उन्होंने उच्च कोटि की संसदीय परंपराएं, परिपाटियां, श्रेष्ठ पद्धतियां सदन में के माध्यम से सदन की कार्रवाई चलाई, आज उनकी श्रेष्ठ परंपराएं मुझे भी मार्गदर्शन देने का काम करती है, क्योंकि वह सदन जब चलाते थे मुस्कुराते हुए सभी पक्षों को साथ लेकर एक निर्वाध और निष्पक्ष रूप में उनकी भूमिका इस संसदीय लोकतंत्र में हमेशा आजाद रखी। और सीपीए जोन थर्ड के अंदर भी उनकी शुरुआत और किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के रीजन के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, स्पीकर आपस में बैठकर चर्चा करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें और उस चुनौतियों को समाधान करने का रास्ता चर्चा, संवाद
बेस्ट प्रैक्टिस से समाधान करने का प्रयास करें। मुझे खुशी है कि आज 20वीं कॉन्फ्रेंस मेघालय में हो रही है। मेघालय, शिलांग, जो अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुआ, देश की सबसे ज्यादा बरसात जिस राज्य के अंदर होती है चेरापूंजी में, बादलों का घर, लेकिन अभी गर्मी है, मौसम परिवर्तनशील है और इस मौसम परिवर्तन को हम देख रहे हैं और इस मौसम परिवर्तन से होने वाली आपदा चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए हम सब यहां पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से जो नया संकट जलवायु परिवर्तन का आया है, उसके लिए क्या समाधान निकाला जाए और जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक आपदा की चुनौतियां आएगी, उन चुनौतियों के लिए हमारी कैसी तैयारी हो, कैसे उसका समाधान हो, क्या क्या चुनौती मानव के कारण हो रही है, क्या क्या चुनौती प्रकृति की छेड़छाड़ के कारण हो रही है। इन सारे विषयों पर हम चर्चा और संवाद करेंगे और इसीलिए लोकतंत्र के अंदर चर्चा और संवाद, विचार विमर्श, उससे हमने हर चुनौतियों का समाधान किया है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश की हर चुनौतियों, आपदा, संकट, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, विकास के नए रास्ते, अपने अपने राज्य की नीतियों, कार्यक्रमों को बनाकर हमने एक बेहतर संसदीय परंपराओं को लागू किया है और जो हमारे मूल में है, लोकतंत्र हमारे मूल के स्वभाव में है, हमारे कार्यक्रम में है, हमारे विचार में है और इसीलिए हमने इन चर्चा संवाद से ही देश को इस प्रगति की ओर ले जाने का काम किया है। और इसीलिए आज जो हमारे सामने दो विषय रखे गए हैं, प्राकृतिक आपदाएं और उसके प्रबंधन और रणनीति की चुनौतियां, दूसरा विषय इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को किस तरीके से हम बेहतर कनेक्टिविटी से यहां के संसाधनों का, यहां की प्रकृति का, यहां के कृषि उत्पादन का, यहां की मानवीय सेवाओं का बेहतरीन उपयोग कर कर अपने अपने राज्य की नई विकास की अवधारणा रखें। ये बात सही है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से चिंतित है, लेकिन हमने उस जलवायु परिवर्तन के अंदर दुनिया से एक कदम आगे बढ़कर इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, विकास के नए आयाम को प्राप्त करने वाला देश, लेकिन विकास के साथ हमने प्राकृतिक संतुलन बनाकर हमने विकास की कार्य योजना बनाई है। और इसीलिए हमने जो विकास का मॉडल बनाया है, उस विकास के मॉडल में कहीं न कहीं हमारे मूल स्वभाव में ही
प्रकृति के नजदीक रहना हमारा मूल स्वभाव रहा है। हमारी लाइफ ऑफ स्टाइल भी प्रकृति के अनुकूल रही है। प्रकृति को हमने पूजा है, सूर्य की पूजा की है, जल की पूजा की है, धरती की पूजा की है, पेड़ की पूजा की है। हमारा एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी प्रकृति से रहा है। इसलिए बदलते समय के अंदर इन चुनौतियों से मुकाबला करने में हमारे मूल स्वभाव से हम निश्चित रूप से इस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान भी निकलेंगे और जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उन प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में भी हम बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर अपने अपने राज्यों के अंदर भी और देश के अंदर भी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में हमने नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन का ठीक से उपयोग करते हुए हमने उसकी प्रबंधन की योजना भी बनाई है। जब आप 2 दिन चर्चा करेंगे तो इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से जो हमारी पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा की जोखिम को कैसे न्यूनतम कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदा आने के बाद किस तरीके से बेहतर प्रबंध कर सकते हैं। उसके लिए जो आप 2 दिन तक चर्चा संवाद करेंगे और चर्चा संवाद के साथ जो बेहतर परिणाम आएंगे उससे राज्य भी अपनी नीतियां बनाएगा, कार्यक्रम बनाएगा, योजना बनाएगा और केंद्र सरकार भी राज्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राज्य की प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए राज्य और केंद्र मिलकर एक ऐसे सिस्टम योजना बनाएगा जिससे हर गांव का व्यक्ति भी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला कर सके, चुनौतियों से लड़ सके। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के 10 एजेंडे के अंदर हमने हमारी स्थानीय क्षमताओं के विकास पर, टेक्नोलॉजी पर और जो हमारी पूर्ति हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में जो रही है प्राकृतिक आपदाओं से रोकने की कार्य योजना, उसको भी ठीक की है। और निश्चित रूप से दूसरा विषय इस राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये धरती एक ऐसी धरती है जहां का मानव संसाधन कुशल है, जहां का मानव संसाधन दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, यहां का मानव संसाधन शिक्षा, संस्कार और प्रकृति के नजदीक वाला मानव संसाधन है और इसका श्रेष्ठतम उपयोग कैसे हो, देश में उनकी श्रेष्ठ सेवाओं को कैसे दें। हमारा जो नौजवान जो सामर्थ्य से, बौद्धिक क्षमता से, इनोवेशन से नई सामर्थ्य शक्ति रखता है, दुनिया के अंदर भारत में हमारे नौजवानों की सामर्थ्य और शक्ति के कारण आज भारत का गौरव सम्मान बढ़ा है। उसमें नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है और इसीलिए जब कनेक्टिविटी बेटर होगी तो निश्चित रूप से हम बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक संसाधनों का विकास कर पाएंगे, हमारी प्रकृति को साथ संतुलन बिठाकर हम एग्रीकल्चर के अंदर प्राकृतिक खेती के रूप में
ये प्रदेश अपने आप में, कई राज्य तो 100% प्राकृतिक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता हो गई है। और इसलिए प्राकृतिक खेती के रूप में यहां की उपज, यहां की औषधियां, यहां की कला, यहां की संस्कृति, यहां की हस्तकला, इन सब का हम बेहतरीन उपयोग जब कर पाएंगे जब हमारी कनेक्टिविटी नजदीक बेहतर होगी। इसलिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में एक योजना बनाई है कि एक छत के नीचे चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे जल मार्ग हो, इन सब बुनियादी ढांचों का एक साथ मिलकर विकास किया जाए। जो प्रदेश इन बुनियादी ढांचों से पीछे रह गए हैं उनको एक विकसित राज्यों के समकक्ष खड़ा किया जाए। और इसीलिए जब आप चर्चा करेंगे तो अलग अलग राज्यों के जनप्रतिनिधियों के जो सदन में चर्चा हुई है, संवाद हुई है कि हम कैसे बेटर कनेक्टिविटी को कर सकते हैं, कैसे रोड कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है, एयर कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है, रेल कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है। इसमें जो विचार आपने जनप्रतिनिधियों के सुने, सदनों में सुने, उनको एक साथ मिलकर सीपीए रीजन में चर्चा होगी तो हम बेहतर कनेक्टिविटी से इन प्रदेशों के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान इस सीपीए की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे पाएंगे। और इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब हमारी चर्चा हो, संवाद हो, उसमें राज्य की कनेक्टिविटी हो और देश के अन्य राज्यों से भी कैसे कनेक्टिविटी हो, एक बेहतर विकल्प भी हमें देना चाहिए ताकि जब कोई सरकार नीतियां बनाए, पॉलिसीज बनाए, विकास की योजनाएं बनाए, उसके अंदर सीपीए जोन के अंदर जो चर्चा संवाद हुए, जो हमने चर्चा संवाद में जो निष्कर्ष निकले, वह इनकी विकास की योजनाओं के अंदर महत्वपूर्ण हिस्सा काम करे और इस पेपर के माध्यम से वह कनेक्टिविटी की योजना बनाते समय आपके विचारों के संवादों का अधिकतम उपयोग करें। इसलिए मुझे याद है भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात कहते थे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकसित होना भारत के लिए अति आवश्यक है और उसको बराबर लाना हम सबका दृढ़ निश्चय है। हम चाहते हैं 140 करोड़ जनता चाहती है कि देश का हर राज्य का विकास हो और राज्य का विकास जब होगा जब सामूहिक प्रयास करेंगे, सामूहिक हमारी कार्य संस्कृति होगी, सामूहिकता के साथ काम करेंगे। मुझे याद है यहां के राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार जब दिल्ली में आते हैं तो एक ही विचार रखते हैं कि हम हमारे राज्य के विकास के अंदर नॉर्थ ईस्ट के सब राज्यों के विकास को साथ लेकर चलें। और ये मूल भावना इस सीपीए रीजन की भी है। इसलिए मुझे खुशी है कि कई राज्यों ने यहां पर कनेक्टिविटी के बारे में भी बेहतर योजना से काम किया है और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उसके विषय के अंदर भी, एसडीजी के विषय में भी लगातार चर्चा और संवाद से कई राज्यों ने विकास के उन मापदंडों में सबसे अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करने का काम किया है। उसी के साथ विकास के मोर्चे पर जब 1920 का हम देखते हैं, सीएसओ डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पूर्व के कई राज्यों ने राष्ट्रीय विकास के आंकड़ों को भी पार करने का काम किया है। और इसी तरीके से चाहे मिजोरम राज्य हो, चाहे अन्य राज्य हो, जिस तरीके से उन्होंने
लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाया है, आज वो विकास की गति के अंदर भारत के अग्रणी अन्य राज्यों के समकक्ष खड़े हो चुके हैं। और इसीलिए ये क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है, जो मैंने पहले बताया कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, हस्तशिला के क्षेत्र में कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भूमिका नहीं हो। केवल उनका ठीक से उपयोग करना, प्रकृति के संतुलन बनाकर उसका उपभोग करना और उसको प्रकृति के अनुकूल बनाकर उसके विकास की योजना बनाना, यह हमारे लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है और इस अवसर का हमें लाभ उठाने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मेरे मन में हमेशा मन में पीड़ा रहती है कि अभी पिछले दिनों जो कुछ भी राज्य में घटनाएं घटी है, वो मानवीयता के तौर पर और सामाजिक तौर पर कोई अच्छी घटनाएं नहीं है। वह हम सबको पीड़ा देती है। सारा समाज, सारा राज्य, सारा देश शांति के रास्ते पर चले, हम शांति बहाली हो, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। शांति से ही राज्य और देश की समृद्धि होती है। और इसीलिए मानवीय तौर पर भी हम सब शांति की अपील करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे किसी भी विषय के कारण किसी को पीड़ा न पहुंचे। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और इस संस्कृति के हिस्से को हम सबको मिलकर सामूहिकता के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं पुनः आज यहां पर यहां के स्पीकर थॉमस ए संगमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, यहां के राज्य के मुख्यमंत्री जी को और इस सीपीए जोन 3 के चेयरमैन पीडी सोना जी को भी कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आपने यहां पर इस सम्मेलन को रखा है। जो चर्चा होगी, संवाद होगा, जो विचार विमर्श होगा और उसके जो निष्कर्ष निकलेंगे, वो निश्चित रूप से राज्यों के विकास की योजना बनाने में, देश के विकास और नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। Honorable delegates, members, a tea party has been arranged for Honorable Speaker Lok Sabha and Deputy Chairman Rajya Sabha, and felicitating them in the annex hall. So all are kindly invited to join. Separate arrangements are made for officers and media in their respective rooms. We will adjourn for half an hour and we will resume again at 4:55 p.m. नमस्कार, आभार, अभिनंदन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
स्वागत स्वरूप आप सबकी ओर से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आपका। उपस्थित देवियों और सज्जनों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तैयार है विकास की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए। इस न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के साथ आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सह वाइस चेयरमैन आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी एडमिरल डीके जोशी जी की। सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से आपके स्वागत संबोधन हेतु। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया जी, माननीय राज्य मंत्री जनरल पीके सिंह जी और अन्य सभी माननीय महानुभाव, आज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आपके द्वारा ऐतिहासिक उद्घाटन विकसित भारत सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण पहल तथा द्वीपवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। एक विकसित देश के लिए जीडीपी पर कैपिटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स, पर कैपिटा इनकम आदि अनिवार्य मापदंड हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी रहे बिना संभव नहीं है। स्वतंत्रता के पहले 7 दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग नगण्य निवेश से इन द्वीपों की पहचान काला पानी के नाम से ही रही। पिछले 5-6 वर्षों में आपके दिशा निर्देश व मुख्यतः आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की दूरदर्शी परियोजनाओं से 95,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश द्वीपों का विकसित भारत की ओर तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है। भारत के पूर्वी तट से लगभग 1,500 किलोमीटर, परंतु म्यांमार व इंडोनेशिया से 100 किलोमीटर से भी कम और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों से अत्यंत निकट इन द्वीपों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के देखते कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एविएशन सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। लगभग 710 करोड़ निवेश से यह नया टर्मिनल इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व सर्विसेज सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट व देश को एक ग्लोबल कनेक्टिंग हब बनाने की दिशा में फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होगा। एक विकसित देश में पब्लिक सेक्टर में पर्याप्त निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने हेतु आवश्यक है। तदनुसार लगभग 60 करोड़ निवेश से शीघ्र सी प्लेन ऑपरेशंस शुरू करने के लिए आरसीएस उड़ान स्कीम द्वारा पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड सेक्टर्स के ऑपरेटर्स का चयन हो चुका है। साथ ही फिक्स्ड विंग सेवाओं को शीघ्र आरंभ करने के लिए पोर्ट ब्लेयर से शिवपुर, कार निकोबार व कैम्बल बे रूट्स पर भी ऑपरेटर्स का चयन पूरा हो चुका है। नए 12 सीटर लार्ज कैपेसिटी सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स द्वारा सीट अपग्रेडेशन के हमारे प्रस्ताव को भी एसएफसी का फाइनेंशियल अप्रूवल प्राप्त हो गया है। एक विकसित देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में पोर्ट ब्लेयर और जीएनआई के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का फाइनल साइट सिलेक्शन तथा लिडार सर्वे पूरा हो चुका है, जहां वर्तमान आवश्यकता अनुसार प्रारंभ में एक ही रनवे, परंतु कॉन्सेप्ट, ब्लूप्रिंट तथा लैंड एक्विजिशन में 2 रनवे, पैरेलल टैक्सी ट्रैक्स
वो मल्टीपल टर्मिनल बिल्डिंग्स अगले 100 वर्षों से भी अधिक के एयर ट्रैफिक के अनुकूल प्रस्तावित हैं। इन द्वीपों के नॉर्थ साउथ एक्सिस में लगभग 800 किलोमीटर फैलाव में 4 एयरपोर्ट्स हर 230 किलोमीटर की औसत दूरी पर उपलब्ध हैं। TNI व शिवपुर एयरपोर्ट्स में रनवे एक्सटेंशन पूरा होने पर ये चारों ड्यूअल यूज स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स 3 किलोमीटर प्लस रनवे से हर बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन में सक्षम और देश के लिए जियो पॉलिटिकल दृष्टि से एक गेम चेंजर साबित होंगे। एक विकसित देश की पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जिसमें एक बड़े सर्विसेज सेक्टर तथा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल व इंफ्रास्ट्रक्चर बेस की आवश्यकता अनुसार हमारी एविएशन सेक्टर की उपरोक्त परियोजनाओं में संतुलित निवेश का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें पूरे सपोर्ट व मार्गदर्शन के लिए हम आपके नागरिक उड्डयन मंत्री जी के आभारी हैं। अंत में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वयं मैं, मेरा प्रशासन और सभी द्वीपवासी पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। आपके स्वागत संबोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय। साथियों, जब हम गर्व से कहते हैं कि भारत का नागर उड्डयन उद्योग दुनिया भर में तेजी से बढ़ता उद्योग है, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे हमें माननीय केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेहद शानदार और सफल प्रयास नजर आते हैं। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से आपके संबोधन हेतु। माननीय मंत्री जी। परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एडमिरल DK जोशी साहब, मेरे सहभागी आदरणीय जनरल VK सिंह साहब, क्षेत्र के सांसद कुलदीप राय शर्मा जी, सचिव राजीव बंसल जी, DGCA के अध्यक्ष विक्रम देवदत्त जी, भारत विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार जी, मुख्य सचिव केशव चंद्र जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव और आज इस विमानतल पर उपस्थित अंडमान और निकोबार क्षेत्र से सभी आए हुए सभी हमारे महानुभाव, आज एक ऐतिहासिक दिन हमारे लिए इस अंडमान और निकोबार में है, जब देश के हमारे प्रधान सेवक, देश के प्रधान रक्षक, देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज वर्चुअल रूप से इस भव्य कार्यक्रम में हम सब के साथ आज जुड़े हुए हैं।